and welcome to Mentoring the Mentors, an institute that accelerates your learning curve. My lovely educators, let's discuss NIPUN. NIPUN is like a national initiative. Initiative for what? Initiative for proficiency. Proficiency in reading with understanding and numeracy, right? NIPUN, NIPUN, National Initiative for Proficiency in Reading with U stands for understanding and numeracy. So okay, we are talking about foundational literacy and numeracy. तो उसको हम कैसे अचीव करेंगे, किस किस का क्या रोल रहेगा, कौन उसमें कैसे कंट्रीब्यूट करेगा, we shall discuss about each and everything, and we are referring to the document by NCERT on NIPUN Bharat. So it takes a village to raise a child. That is a quotation. You must have read it several times. You must have come across it. So my dear educators, certainly its meaning is it's not a one man army. एक पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक पर्सन की जॉब नहीं है कि वो एक बच्चे को रेज कर पाए completely holistically, right? For that it takes a village to raise a child. We require number of partners, the stakeholders, the teachers, the parents, like the community. The child learns from everybody. So a successful mission to improve foundational learning of all the children in our country cannot be envisaged without an active role played by teachers, parents, community, and the local bodies. So we shall discuss the role played by teachers, parents, community, and local bodies. So let's begin with the role of a teacher first, right? Every teacher who deals with foundational learners must understand that children learn in a variety of ways. They have got different learning levels in each class. इसके बारे में हम अपनी हर वीडियो में बात करते हैं. लर्निंग स्टाइल्स की बात करते हैं, सेल्फ बेस्ड लर्निंग की बात कर रहे हैं, अपनी मेंटल प्रोसेस की बात कर रहे हैं, अपनी लाइक्स एंड डिसलाइक्स की बात कर रहे हैं. Right? That is the basis for each and everything. Right? So it means we are on a right track. Right? If you understand that. Now, हमें उसके लिए क्या करना है? What will be our role? We need to encourage children to talk. Gone are the days when teacher was considered as a sage on the stage. कि teacher ही embodiment of knowledge है. Teacher will be delivering the content in the class and the students they'll be passive recipients. बस बैठकर वो सुनेंगे. वो नहीं है अब, right? Children should be encouraged to talk. They should be encouraged to discuss, right? या तो बच्चों को encourage किया नहीं जाता बोलने के लिए, or if at all they come up with answers, they come up with choral responses. All together in the class, they will say, yes, ma'am, no, ma'am, or whatever. I'm together answer. उसमें से 40 में से कितने बच्चे बोल रहे हैं, कितने नहीं बोल रहे, जो कभी भी इनिशिएटिव नहीं लेते, वो हमेशा पीछे रह जाते हैं, उनको encourage नहीं किया जाता है, right? मौका ही नहीं मिलता आगे आने का, अपने विचार रखने का, अपनी क्रिएटिविटी प्रेजेंट करने का, क्रिटिकली सोचकर उस अपने शब्दों को, अपने विचारों को आगे रखने का मौका नहीं मिल पाता. तो एज अ टीचर वी नीड टू एनकरेज our children to talk. Now, creating an engaging learning environment. Learning environment, it should be engaging. In my every video, I say I start and I end my video with the words like, if you want to bring that kind of engagement, enrichment, excitement in your classes, then do subscribe to Mentoring the Mentors, because this is a place where we discuss such strategies that will help you motivate your learners, that will help you engage your learners in the teaching learning process, right? They should be the active participant. If you keep on speaking all the time, the children, they'll start feeling disinterested, they'll get distracted, right? Once they get distracted, they will not find any kind of enjoyment or fun in the class. They will not take any kind of interest in your class. So for that, you need to create an engaging environment in your class, right? By using different kinds of activities, right? By listening to them, giving them chance to speak. ये नहीं है कि क्लास में उनको बोल दिया कि हेड डाउन करके बैठ जाओ, बस शोर कर रहे हैं, हेड डाउन करके शोर कर रहे हैं, उनके अंदर कुछ है बताने के लिए. गिव देम सम चांस, गिव देम अ प्लेटफॉर्म टू स्पीक और शेयर देयर थॉट्स विद यू or with other students. Teaching through experiential and real world based pedagogy. Pedagogy is how we teach. Curriculum is what we teach, right? So how we are teaching, how we are engaging the students in different kinds of activities. If teaching in the classroom is just textbook centered, if you will be just reading the content, or maybe you are making the children read the content or the text from the textbook, that will not create any kind of engaging environment. You are just focusing on completing the curriculum, right? Children, they'll feel disconnected
from their own world, from their context, from their environment, from the real world experiences. So you need to connect them with the real world. उन्हीं के वर्ल्ड में से, उन्हीं के सराउंडिंग में से आपको एग्जाम्पल लेके उनको कनेक्ट करना है with the new knowledge, right? This is called from known to unknown. जो उनको पता है, जो वो जानते हैं, वहां से उसको unknown world में लेके जाना, taking them from simple to complex, right? So this is how they'll feel connected, like whatever is happening outside the school, in their real life, in their surroundings. This is a strategy that we need to follow, and we need to plan our lesson plans accordingly. Supporting struggling learners, like teachers must be able to provide additional support to the children who are lagging. There are some students, see, who are lagging, who need some support, who like जिनका शायद पहले कुछ लर्निंग गैप्स रह गया है. अगर उस गैप को कंप्लीट नहीं किया जाता तो वो थ्रू आउट वो लाइफ में वो गैप बना रहता है. तो इसलिए हमें चाहिए कि उनके जो लर्निंग आउटकम्स हैं, एक क्लास के हमारे कोई लर्निंग आउटकम्स हैं, द चाइल्ड इज कमिंग टू अदर क्लास, उसका हम पहले टेस्टिंग करते हैं कि स्कूल कि उनको कितना आ रहा है, रिकैपिचुलेशन करते हैं प्रीवियस कंटेंट जो है बच्चे ने प्रीवियस करिकुलम जो स्टडी किया. अगर बच्चों को कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी नहीं है, अगर उसको समझाया नहीं गया है by the help of remedial classes, right, enrichment classes, whatever you say, तो फिर वो गैप हमेशा के लिए बना रहता है और आगे के लिए बच्चे की जो ग्रोथ है वो हिंडर होती है, राइट, अफेक्ट होती है. Support struggling learners. We have to support them by providing additional support in the form of enrichment classes, remedial classes, continuous assessment, and identifying learning gaps frequently. Continuous assessment होना चाहिए. एक बार अगर आपने टेस्टिंग करी है तो उसके 1 महीने बाद, जैसे हम यूटी लेते हैं या कोई टेस्ट लेते हैं, तो आपको उस पर्टिकुलर एक बच्चे के लिए जिसके लिए आप वर्क कर रहे हो, जिनको सपोर्ट कर रहे हो, तो उनका एक अलग से असेसमेंट होना चाहिए कि अब वो कौन से माइलस्टोन पर है. ये आपका एक गोल है, उसको छोटे छोटे माइलस्टोन में आपने डिवाइड कर दिया, यहाँ पहुंच के और कितना है. तो यू विल बी एबल टू मेजर देयर ग्रोथ, you will be able to highlight their grow and glow areas. That is really very important, right? So this is to be done. उसके लिए क्या जरूरत है? Continuous assessment की. Okay, continuous assessment करेंगे तो पता चलता रहेगा, we'll be able to track our growth, our child's growth. Now, creating a print-rich environment in the classroom. Another point, another role is हमारा जो classroom है उसमें प्रिंट रिच एनवायरनमेंट होना चाहिए. प्रिंट रिच मींस स्टोरी बुक्स होनी चाहिए, कुछ अलग से कुछ पोस्टर्स लगे होने चाहिए बच्चों के रेफर करने के लिए. समवेयर यू सी वी फॉलो बाला आल्सो, बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड, राइट. तो वो बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड के बाला में कुछ ब्यूटीफुल पिक्चर्स या आपके इलस्ट्रेशंस हैं, या बिल्डिंग में ऐसा कुछ बना हुआ है दैट यू आर लर्निंग फ्रॉम द बिल्डिंग इटसेल्फ. इसी तरीके से उसको डिजाइन किया गया है, बट इट शुड बी कॉन्स्टेंटली, उसको कुछ और एडिशन उसमें करते रहना है. इफ इट इज पॉसिबल कुछ चेंजेस करते रहना है, कुछ नया लेकर आना होगा आपको क्लास में. एंड न्यू टॉयज, प्रिंट रिच मटेरियल, टॉय बेस्ड पेडागोजी की जब हम बात करते हैं तो ऑल दीज थिंग्स शुड बी अवेलेबल फॉर द चिल्ड्रन, बिकॉज टॉय बेस्ड पेडागोजी के ऊपर भी हमने बहुत डिस्कस किया था. चिल्ड्रन दे आर लर्निंग फ्रॉम देयर टॉयज, क्या उनसे सीखते हैं, राइट? थ्रू स्टोरीज, थ्रू टॉयज दे लर्न अ लॉट. सो दैट सॉर्ट ऑफ मटेरियल टू बी प्रोवाइडेड, TLM, teaching learning material, should be available in the classrooms. For that you need to consult your management, or you can also develop your own material too, right? When we talk about use indigenous material, it should not be that expensive, it should be locally easily available, right? So multi-level play-based student-centered style of learning should be adopted for early childhood care and education programs. I mean, we are talking about foundational level, that is from nursery to class 2. अब हम उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, right? So in service teachers training, wherever it is available, make sure as and when it is available, you should go for it, right? Pursuing a particular course during a pre-service training doesn't mean कि आपको आगे कुछ पढ़ने की, सीखने की जरूरत नहीं है. You have to be a lifelong learner, my dear educators. So there is another program, Nishtha, National Initiative for School Heads and Teachers Holistic Advancement. उसके लिए इसके अंडर डिफरेंट प्रोग्राम्स जो है वो लॉन्च किए जाते हैं by CBSE, by NCERT, and make sure you pursue it as and when it's available. हमने फंक्शनल लिटरेसी, न्यूमरेसी, एक्शन रिसर्च, नंबर ऑफ कोर्सेज हैव बीन लॉन्च्ड at दीक्षा प्लेटफॉर्म टू. निष्ठा में भी कुछ लर्निंग आउटकम्स के, साइंस को कैसे पढ़ाना है, डिफरेंट कोर्सेज दे आर अवेलेबल. NCERT X
जो है एक बॉडी एडेक्स उनका प्लेटफॉर्म, उसके ऊपर भी दे आर लॉन्चिंग डिफरेंट कोर्सेज, लाइक आई हैव अटेंडेड 1 year लॉन्ग प्रोग्राम ऑन टीचिंग अपर प्राइमरी क्लासेस साइंस, राइट, उसके लिए डिफरेंट कि आपको कैसे पढ़ाना है, साइंटिफिक स्किल्स कैसे बच्चों में जो है वो इंकलकेट करनी है, पेडागोजी क्या रहेगा, कैसे एक पर्टिकुलर टॉपिक को, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के पर्टिकुलर टॉपिक्स को आपको कैसे पढ़ाना है, सो एवरीथिंग इज बीइंग एक्सप्लेन्ड ओवर देयर। सो दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड माय डियर एजुकेटर। सो इसके लिए कुछ टीचर एक्टिविटी चेकलिस्ट दैट हैज आल्सो बीन गिवन ओवर हियर। उस चेकलिस्ट को हम पढ़ लेते हैं। टीचर्स टू अंडरगो इन सर्विस ट्रेनिंग टू अंडरस्टैंड बेटर। इन सर्विस ट्रेनिंग क्यों अटेंड करनी? अंडरस्टैंडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ फाउंडेशनल लर्निंग। यहाँ हम सिर्फ फाउंडेशनल लर्निंग पर फोकस कर रहे हैं क्योंकि हम फाउंडेशनल लेवल की बात कर रहे हैं, राइट। एंड टीचर्स बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स टुवर्ड्स द लर्नर्स वो टाइमली कैसे उनको अंडरस्टैंड करना है, बच्चों की लर्निंग एबिलिटीज को, उनके इंटरेस्ट को कैसे समझना है, राइट, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंगली उनको कैसे पढ़ाना है, एज पर द नीड ऑफ द लर्नर, एज पर द नीड ऑफ द टाइम, right? And early language literacy, early numeracy, pedagogical approaches, art integrated learning, toy based, game based pedagogy, assessment in early years के क्या इंपॉर्टेंस और कैसे लेना चाहिए, काउंसलिंग इन अर्ली ईयर्स, प्रमोटिंग रोल ऑफ पेरेंट्स इन द कम्युनिटी इन द फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। पेरेंट्स को कैसे आप कोलैबोरेट करवाएंगे डिफरेंट एक्टिविटीज में, एंड आइडेंटिफाइंग एंड एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स इन अर्ली ईयर्स, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। दिस इज हाउ द टीचर्स दे आर प्रिपेयर्ड ऑन ऑल द एस्पेक्ट्स। टीचर को ये पता हो कि असेसमेंट कैसे करना है, पढ़ाना कैसे है, टीचर स्टूडेंट्स की लर्निंग को कैसे फैसिलिटेट करना है बेस्ड ऑन द नीड्स एंड ऑल, पेरेंट्स को साथ में कैसे कोलैबोरेट करवाना है, तो ये सब चीजें टीचर्स को पता होनी चाहिए, देन ओनली द टीचर विल बी प्रिपेयर्ड। एंड प्री क्लास प्रिपरेशन, जब हम प्री क्लास प्रिपरेशन की बात करते हैं, क्लास से पहले क्या प्रिपरेशन करना है, डिजाइनिंग ओन मटेरियल, जो आपके पास एग्जिस्टिंग मटेरियल अवेलेबल है, डिफरेंट एक्टिविटीज, वर्कशीट्स, टॉयज एटसेट्रा, वो सब रेडी करना बिफोर द क्लास, कि क्लास में जाने से पहले यू हैव टू बी रेडी। प्रिंट रिच एनवायरनमेंट, आपके पास जो है वर्कशीट्स हैं, पोस्टर्स हैं, योर स्टोरी बुक्स आर देयर, तो वो सारे TLMs आपके रेडी हैं। एंड फॉर दैट यू हैव टू यूज इंडिजीनियस मटेरियल दैट इज लोकली अवेलेबल, उसको रीयूज किया जा सकता है, दैट इज नॉट एक्सपेंसिव, लो कॉस्ट एंड मे बी नो कॉस्ट मटेरियल टू बी यूज, सेफली एक्सेसिबल होना चाहिए। एंड व्हाटएवर द TLMs you are using in the class, that should be एट द हाइट ऑफ द लर्नर्स। आई मीन ऐसा नहीं कि बच्चे इतने छोटे छोटे हैं, वो छत के ऊपर लगाया है कि बच्चे खराब ना करने, कहीं टच करते हैं वो दिख भी नहीं रहा है, इट्स नॉट विजिबल, तो दैट इज ऑफ नो यूज, राइट। एंड क्लासरूम में अगर आपके पास स्पेस है तो डिफरेंट कॉर्नर्स जरूर बनाने चाहिए, लाइक रीडिंग कॉर्नर है, टॉयज पड़े हैं एक जगह पर, टू एनकरेज फ्री प्ले टू द लर्नर्स। फ्री प्ले, ठीक है, हमने एक पहले पेडागोजी ऑफ प्रिंसिपल्स में डिस्कस किया था, फ्री प्ले, गाइडेड प्ले, स्ट्रक्चर्ड प्ले। फ्री प्ले जिसमें बच्चे अपने आप खेलते हैं, अपने आप चूज करते हैं कि उनको क्या प्ले करना है। गाइडेड प्ले, दैट इज अंडर द सुपरविजन ऑफ द टीचर। एंड स्ट्रक्चर्ड प्ले, जिसमें एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में प्ले ऑर्गेनाइज किया जाता है, गाइडेड बाय द टीचर, जिसमें स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट डिफरेंट लर्निंग्स होती है, उसको मेजर किया जाता है, राइट। तो अगर आपने क्लासरूम में एक है कि आपने योर लिटिल चिल्ड्रन दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क, जो आपने उसको राइटिंग का टास्क दिया है, रीडिंग का टास्क दिया है, एंड द चाइल्ड इज फ्री, आपने उसको चेक भी कर लिया, टू बी let them be engrossed in different kinds of activities। तो आपका एक स्टोरी कॉर्नर है, एक साइड पर कुछ स्टोरी बुक्स आपने रखी है, द चाइल्ड कैन गो एंड रीड द स्टोरी बुक्स। बच्चे का मन है तो इन अनदर कॉर्नर यू हैव मेड अ टॉय कॉर्नर, द चिल्ड्रन कैन गो एंड can explore the toys also without disturbing the other children, obviously, right? But you have to facilitate this kind of teaching learning environment in your classes, right? Display of the material should be at the eye level of the children and assesses prior knowledge and literacy of the children। प्री क्लास पढ़ाने से पहले क्या प्रिपेयर करके जा रहे हैं, उससे पहले आपको टेस्ट करना पड़ेगा, पीके टेस्टिंग, कि बच्चों को कितना आता है। सो द मिनिमम लेवल जो उनको पता है, आपको वहां से स्टार्ट करना है उसकी नॉलेज से, टू कनेक्ट द सेम विद दैट, ओके। एंड नाउ क्लासरूम में क्या करना है, ठीक है, टीचर की प्रिपरेशन होगी, प्री क्लास प्रिपरेशन हो गया, आप क्लासरूम में क्या करेंगे, पढ़ाना है जब विल बी यूजिंग मदर लैंग्वेज टिल क्लास 2, तो हम बात करेंगे कि मदर लैंग्वेज में ही पढ़ाना है। और यू कैन गो हैड विद मल्टीलैंग्वेलिज्म, आप इंग्लिश के थ्रू पढ़ा रहे हैं, यू हैव टू ऐड हिंदी आल्सो, आई मीन टुगेदर, आप वहाँ कुछ एक्सेंट ऐसा है, कुछ आप यू आर यूजिंग पंजाबी आल्सो, बच्चों को कुछ पता है, देयर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, आप भी फेमिलियर हो, यू आर आल्सो मल्टीलिंगुअल, आपको 2-3 लैंग्वेजेस आ रही हैं, तो अकॉर्डिंगली यू कैन फैसिलिटेट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। और यू कैन आल्सो इन्वॉल्व द
learners in facilitating teaching learning through multilingualism. इसके लिए मैंने बहुत सारी strategies आपके साथ already share करी हैं. 5 videos are already there on my channel on multilingualism. You can explore them, right? And more focus to be laid on joyful learning, experiential learning, learning through arts, stories, rhymes, games, toys, songs, and activity-based teaching that would enhance your teaching learning process, and children, they'll enjoy and they will be the active participants in that process, right? And interdisciplinary or multidisciplinary learning should be focused. आपका फोकस रहेगा कंटेंट पे कि आपको समझाना क्या है. उस चीज के लिए you will be integrating English, mathematics, EVS together, राइट? हिंदी मतलब डिफरेंट लैंग्वेजेस और न्यूमरेसी सबको आप एक साथ टुगेदर इंटीग्रेट करके पढ़ाएंगे, बिकॉज आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होना, राइट? एंड सेवरल एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग लर्निंग एक्सरसाइजेज आर, इफ दे आर अवेलेबल विद यू, परफेक्टली फाइन. इफ यू हैव बीन प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट और द स्कूल, or if you're designing it on your own, make sure you carry it and engross the children in such kinds of activities. Now, letter recognition, correlations of the sounds, number counting, comparison, pattern, classification, ये आपकी different learning outcomes हैं. For that, you can refer to the learning outcome manual. और यहाँ पर इस platform पर भी हम class wise learning outcomes LOs की बात करेंगे. Accordingly, you need to plan. और इसके लिए आपको और क्या ध्यान रखने की जरूरत है? Sensitivity towards gender, gender equality, डिसेबिलिटी, डिसेबल जो बच्चे हैं उनको एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट देना, डिफरेंशियल लर्निंग नीड्स, बच्चों की अपनी नीड्स हैं, अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, अपना बैकग्राउंड है, राइट? तो उसके अकॉर्डिंगली आपको उनकी लर्निंग को फैसिलिटेट करना, राइट? कैसे करेंगे? बोले कैसे करेंगे? उसमें यू हैव टू एंगेज देम इन डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज. आपके पास ऑडिटरी लिजनर हैं, विजुअल लर्नर्स हैं, right? You have got kinesthetic learners, you have got tactile learners. तो उनके लिए आपको different kinds of activities plan करनी पड़ेंगी ताकि सबको लगे कि this lesson has been made for me, right? And now let's talk about assessment, right? इसमें हम स्कूल बेस्ड असेसमेंट यूज करते हैं. SB है, बाहर से कोई असेसमेंट नहीं किया जाता. तो हर एक स्कूल ने एक अपना अलग से क्राइटेरिया बनाया होता कि कैसे हमने असेसमेंट लेना है. पर जो भी आप असेसमेंट ले रहे हैं उसमें ऑब्जर्वेशन शुड बी द की. ओके, ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, बच्चों को असेस करना चाहिए बेस्ड ऑन देयर ऑब्जर्वेशन, राइट? यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर एबिलिटीज, देयर इंटरेस्ट, देयर लर्निंग स्टाइल. और ऑब्जर्वेशन कितनी लेनी है आपको हर एक एक्टिविटी की, हर एक के लिए. जैसे विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लाइन आल्सो, लाइक बेस्ड अपॉन द ऑब्जर्वेशन टीचर्स नीड टू प्लान. पहले आप ऑब्जर्व करेंगे बच्चों की पार्टिसिपेशन को, बच्चों के एंगेजमेंट को, बच्चों के इंटरेस्ट को इन द क्लास, एंड बेस्ड ऑन दैट आप अपने लेसन प्लान को भी उसके अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे. लाइक अगर आपने देखा है कि क्लास में बच्चे जो है उनका ज्यादा इंटरेस्ट विजुअल्स की तरफ है, तो आपको वो सब चीजें इसमें ज्यादा ऐड करनी है. अगर आपको लगता है कि बच्चे पर्टिकुलर कंटेंट में समझ नहीं पा रहे हैं, दे आर हैविंग सम रीडिंग डिफिकल्टीज, तो आपको अपने लेसन प्लान में रीडिंग को और बेटर बनाने के लिए कुछ एक्टिविटीज जो है वो ऐड करनी होंगी. इसके अकॉर्डिंगली लाइक जैसा आप ऑब्जर्व करते हो, राइट, उसके अकॉर्डिंगली आप अपना लेसन प्लान जो है उसको मॉड्यूलेट करते हैं. एंड टेस्ट एट लीस्ट 10 आइटम्स एट 2 प्रोफिशिएंसी लेवल्स. मिनिमम 10 आइटम्स को आपको असेस करना है, लाइक फॉर ईच लर्निंग आउटकम. हर एक लर्निंग आउटकम के लिए डिफरेंट डिफरेंट 10 आपको टेस्ट आइटम्स लेनी होंगी फॉर ईच सब्जेक्ट, फॉर ईच ग्रेड, फॉर ईच चाइल्ड. इसके बारे में और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे व्हेन वी विल बी टॉकिंग अबाउट लर्निंग आउटकम्स. ओके, सो रिलैक्स. मेंटेनिंग पोर्टफोलियोज फॉर ईच चाइल्ड्स वर्क, सैंपल डेटा. हर एक बच्चे का जो काम है, सैंपल है, उसको कोलेट करके उनके पोर्टफोलियोज बनाने में आपको हेल्प करनी है बीइंग अ टीचर, राइट? तो वो पोर्टफोलियोज के लिए भी आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड नंबर ऑफ वीडियोस ऑन माय चैनल, यू कैन गो थ्रू इट, राइट? सून आई विल बी शेयरिंग विद यू मोर पोर्टफोलियो फॉर्मेट्स एज वेल, राइट? सो कंडक्टिंग फ्रीक्वेंट PTMs एट स्कूल लेवल, और मे बी कहीं कहीं पर अगर ये फिजिबिलिटी है, पॉसिबल है, ये प्लान किया जाता है कि यू आर विजिटिंग होम्स ऑल्सो. ठीक है, कहीं पर ये पॉसिबिलिटी है, कहीं पर नहीं भी है, बट जहां पर भी जैसे पॉसिबिलिटी है, यू कैन कंडक्ट इट. एटलीस्ट यू कैन इनवाइट द PTM पेरेंट्स ऑन द PTM एंड यू कैन डिस्कस द सेम. Okay, engage them in their sort of activities. They'll be able to know about the glow and the grow areas of their children. Personalized and easily understandable report cards. Report card format अब next video में हम discuss करेंगे. रिपोर्ट कार्ड फॉर्मेट जो है वो ऐसा होना चाहिए पर्सनलाइज, जिससे कि आपको बच्चे की ग्रोथ का पता चले. नंबर की गेम में नहीं भागना है कि नंबर कितने आए, मार्क्स कितने आए हैं. यहाँ हम बात करते हैं लर्निंग की.
बच्चे बिगनर लेवल पर हैं, इंटरमीडिएट लेवल पर हैं, एडवांस लेवल पर हैं, यहाँ एक आपने प्रोफिशिएंसी का लेवल सेट किया है। तो बच्चे उससे कहाँ डेविएट कर रहे हैं? आई मीन उनको वहां तक पहुंचने के लिए और कौन से माइलस्टोन अचीव करने हैं, यानी उनके ग्रो एरियाज क्या हैं, या आपने प्रोफिशिएंसी लेवल तो ये सेट किया था उस एज के बच्चों के लिए, बट बच्चे उससे भी बियॉन्ड जा रहे, बहुत अच्छा कर रहे हैं, राइट? सो दे आर द ग्लो एरियाज ऑफ द चिल्ड्रन। इस तरीके से आपको उनको उनकी लर्निंग को फैसिलिटेट करना है, राइट? एंड ट्रेनिंग ऑफ द एसएमसीज, एसएमसी क्या होता है? स्कूल मैनेजमेंट कमिटी मेंबर्स, राइट? तो उनकी ट्रेनिंग करना ताकि वो भी फेमिलियर हो कि लर्निंग आउटकम्स क्या है, पढ़ाना कैसे है, हमारा स्कूल कैसे चल रहा है। दे ऑल्सो be able to facilitate in achieving those learning outcomes, right? Organizing remedial periods in mohalla classes, it is written for previous grade learning loss। अगर पहले grade learning का, पहले वाली क्लास की लर्निंग का कोई लॉस हुआ है and the children they have been promoted to the next class, हो जाते हैं फर्स्ट के बाद सेकंड में चले गए, बट एक पर्टिकुलर कोई कॉन्सेप्ट है, कोई क्लैरिटी नहीं हुआ है और फिर उसी के बेसिस पर नेक्स्ट क्लास में उनको लर्न करना है, तो वो गैप रह जाता है। तो उसके लिए जैसे आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड, रिमिडियल क्लासेस प्लान की जा सकती हैं, मे बी आउटसाइड द स्कूल कम्युनिटी क्लासेस, named here mohalla classes, community classes can also be planned if it is possible, right? And organizing and participating in academic review meetings should be held। उसमें रिव्यू होगा, क्या होगा, किसका रिव्यू? टीचर्स पढ़ा कैसे रहे हैं, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या लर्निंग गैप्स उन्होंने नोटिस किए हैं, व्हाट इज देयर प्लान कि उनको कैसे जो है ब्रिज किया जाए उन लर्निंग गैप्स को। मंथली मीटिंग्स एट द क्लस्टर और द ब्लॉक लेवल्स टू लर्न द न्यू स्ट्रैटेजीज कि दूसरे स्कूल में कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज की जाती हैं, उनके जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको हम भी इम्प्लीमेंट करें, एक दूसरे के साथ शेयर करने के लिए जो हमारे सहोदयास बने हैं उसमें, या क्लस्टर या ब्लॉक लेवल पर ये मीटिंग्स जब ऑर्गेनाइज होती है वहां पर अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करनी चाहिए। कोई डिफरेंट स्कूल का आपस में कोई कंपटीशन नहीं हो रहा है, हम सभी का एक ही टारगेट है, बच्चों को अच्छी एजुकेशन दें, और उसके लिए लेट्स कोलैबोरेट विद ईच अदर। छुपाने का क्या मतलब है कि ऐसे बताना चाहिए, राइट? ओपनली शेयर कि ये करो, ऐसे यू विल बी एबल टू डू बेटर इन योर क्लासरूम, राइट? यू विल बी एबल टू बेटर अचीव योर लर्निंग आउटकम्स। कॉन्फ्रेंसेज एंड सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, इन सर्विस ट्रेनिंग, जब हो जहां हो, मेक श्योर यू पार्टिसिपेट, यू लर्न समथिंग, उसमें से आपकी कोई लर्निंग जरूर होनी चाहिए, दिखावे के लिए नहीं पार्टिसिपेट करना, गए हैं तो कुछ सीख के आएंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, दैट इज mandatory। And in the next video we shall talk about parent and community engagement। So my dear educators, stay tuned, like, subscribe and share mentoring the mentors। Have a nice day।